अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल गुड ओवर देयर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस सिलसिले में वी हैव बीन डिस्कस 3 ऑफ द स्किल्स। नाउ टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन 4 and last skill of English language, that is called what is writing. But before going to discuss this skill, we should know about the 4 main skills. There are 4 skills of English language that is called LRSW. L stands for listening, R stands for reading, S stands for speaking, and W stands for writing. These 4 skills further divided into 2 subcategories. Number 1 called productive skills and number 2 is called receptive skills. In productive skills, we have included speaking skills and writing skills. Further, in receptive skills, we included listening skills and reading skills. अब हमें मालूम होना चाहिए कि रिसेप्टिव स्किल्स क्या हैं. Listening and reading both rely on each other. And productive skills are just like writing and speaking are more complex, and for this the proper knowledge of language is required. But as we know, all of the 4 skills in English language are important and support each other. All the 4 skills are interconnected and these skills cannot be taught independently. All 4 skills facilitate language learning. 4 skills कौन सी हैं? In which we have been discussed listening, speaking, reading, and writing. Today we will discuss writing skill. Writing skill. Writing is the productive skill. As we have been discussed, there are 2 main subcategories of skill, receptive and productive. Writing skill is included in productive skills because in this we produce something. It is more complicated and required to follow all the rules. It involves not just a graphic representation of speech, but the development and presentation of thoughts in a structured way. With the help of writing skill, a person can convey a meaningful message to the reader. There is 2 styles of writing. Number 1, free writing, and number 2, process writing. Free writing used for collecting idea in random order, and process writing used for polishing the writing style. हम 2 तरह के स्टाइल में लिखते हैं. नंबर 1 इज फ्री राइटिंग, जिसमें हम कोई भी आइडिया जो होता है उसका स्केच बना लेते हैं. और प्रोसेस में क्या है? प्रोसेस में हम डिटेल्ड में एक स्ट्रक्चर्ड वे में, जिसमें हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वोकैबुलरी है, मेन थीम है, मेन कॉन्सेप्ट है, तमाम रूल्स को लेकर जब हम चलते हैं तो वो कहलाती है प्रोसेस राइटिंग. Now, what are the aspects of effective writing? There are 7 aspects or rules that we have to follow for effective writing. Number 1 is grammar, number 2 vocabulary, number 4 punctuation, number 5 layout, number 6 linking, and number 7 style. Grammar. Grammar क्या है? That grammar is important for both speaking and writing. Speaking में क्या है? हम grammar का use जो है वो easier way में कर रहे होते हैं. But in writing, we have to follow the proper rules. हमें proper rules को जब हम लिखते हैं तो follow करना होता है उसके sentence structure के लिए. Number 2, vocabulary. Vocabulary, being able to choose the most accurate word to express your thoughts in writing. Vocabulary में आपको command हासिल होना ज़रूरी है. जब आप लिख रहे होते हैं कुछ तो definitely आपने अपनी thoughts को English language में convert करके लिखना होता है. The more accurate word is important to convey your expression or thought. Number 3, spelling. Spelling in grammar is very important. Spelling in the sense कि आपने जो भी word लिखा है उसका spelling दुरुस्त होना चाहिए. Our students need to learn the spelling of each word. अक्सर spellings जो होते हैं वो भूल जाते हैं या correct नहीं होते, तो उससे पूरी की पूरी आपका जो राइटिंग स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. नंबर 4, पंचुएशन. पंचुएशन इज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिटन टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट इन द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. पंचुएशन के जो भी आपने थॉट लिखी है उसका लिंक आपस में होना ज़रूरी है. उन वर्ड्स का लिंक, उन सेंटेंसेस का लिंकेज होना ज़रूरी है ताकि कोई भी पढ़ने वाला जो कुछ आपने लिखा है उसे समझ सके. Number 5 is called layout.
लेआउट क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ आपने लिखी है, जैसे स्टोरी का लेआउट डिफरेंट होता है, एप्लीकेशन का डिफरेंट होगा, ऐसे का डिफरेंट होगा, नॉवल का डिफरेंट होगा। आपका लेआउट बेसिकली प्रेजेंट करेगा आपकी थॉट को या जो भी चीज़ आपने कन्वे करनी है। तो अगर आपने नॉवल लिखना है तो उसका लेआउट भी नॉवल की तरह ही हो, ना कि स्टोरी की तरह हो। नंबर 6, लिंकिंग। लिंकिंग कंसिडर्ड द आइडियाज। जो भी इंफॉर्मेशन और आइडियाज आपने कन्वे किए हैं उनमें आपस में लिंक होना ज़रूरी है। सेंटेंसेस का लिंक होना ज़रूरी है, एज वेल एज आपने जो पैराफ्रेजिंग की है, पैराग्राफ्स बनाए हैं, उनका भी आपस में लिंक ज़रूरी है जो आपका टॉपिक है उससे। स्टाइल। Style, for example, our English language, we have been used different types of style in which we are going to discuss. For example, आपने किसी फ्रेंड को अगर लिखना है तो उसको आपने किस तरीके से मुखातिब करना है, किसी अथॉरिटी को लिखना है तो आपने किस तरीके से मुखातिब करना है। तो these are different styles that we have used in writing skill. Now, different forms of writing activity. हम मुख्तलिफ तरह की फॉर्म्स को यूज़ करते हैं जब भी हम कुछ लिखते हैं। नंबर 1, लेटर्स। गेट योर स्टूडेंट्स टू मेक कंप्लेंट्स, थैंक्स, आस्क फॉर एंड गिव इंफॉर्मेशन और एडवाइस, प्रिपेयर जॉब एप्लीकेशन एटसेट्रा। आप बच्चों को डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं इन द क्लासरूम इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लेटर्स। Number 2 is called creative writing. In this activity, you can use pictures or being a story and ask student to finish it. Or you can use a personal situation where the student was happy, sad, surprised, shocked, etc. आप स्टूडेंट से किसी भी किस्म की स्टोरी लिखवा सकते हैं, उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर उसको बोल सकते हैं कि वो कुछ लाइनें लिखे और आप उसे चेक कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग क्लासरूम में प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग द राइटिंग स्किल। Third activity is based on to keep a diary. Ask your student to keep a diary and student need to present an argument, the point of view and in a logical way and write a conclusive paragraph. This is often required by exam board. फॉर एग्जाम्पल अगर वो डेली की आप उसे एक्टिविटी दें कि वो डेली की अपनी डायरी लिखे, अपने एक्सपीरियंस को लिखे इंग्लिश में, वट एवर, सिंपल से स्टार्ट करेगा, जो भी उसको वर्ड्स आते हैं, जो भी उसकी सोच है, उसको उसने अपनी डायरी में कन्वर्ट करना है, लिखना है। उसके बाद अगर ये उसकी हैबिट डेवलप आप कर देते हैं तो डेफिनेटली डे बाय डे उसकी लैंग्वेज स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी। इंस्ट्रक्शंस। It might be direction, changing a wheel, cooking a meal, asking a cup of tea, repairing something or applying for a visa. Instructions. Instructions means उसको हिदायत दें कि वो डिफरेंट तरह की डायरेक्शंस के मुतालिक लिखे। व्हील को किस तरह से फॉर एग्जांपल चेंज करना है, कुकिंग के मुतालिक लिखना है, या हाउ टू मेक अ टी और रिपेयरिंग एनी सॉर्ट ऑफ गैजेट और हाउ टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा. This is, I just mentioned, for example, this is based on the classroom situation कि टीचर कौन सी एक्टिविटी या कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो है स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के ग्रुप के लिए, एज लेवल के लिए, मेंटल एज के लिए डिज़ाइन करता है फॉर इम्प्रूविंग द राइटिंग स्किल. Number 4 is called dictation. A dictation can have a calming effect on young learners. It is also useful for teachers who have limited resources and need to dictate a text for a reading skill lesson. Alternatively, you could ask your student to dictate to each other and to focus also on pronunciation and listening. Dictation में क्या है? टीचर कोई भी पैराग्राफ, कोई भी टेक्स्ट जो है वो लाउडली बोलता है और बच्चों ने उसको जल्दी जल्दी लिखकर नोट करना होता है। ये एक्टिविटी बहुत यूजफुल है व्हेन यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. And also you can divide the students into different groups and they dictate to each other. This mainly focus on pronunciation as well as listening skill. मतलब चारों स्किल इसके अंदर simultaneously वर्क कर रही हैं, बोल भी रहा है, एक सुन भी रहा है, लिख भी रहा है और बाद में आप उसको पढ़ भी रहे हैं.
Levels of writing skills. There are different levels of writing skills, but generally we have divided these levels in three bases. Number one, for beginners and for elementary students. In this level हम different तरह की activities use कर सकते हैं writing skill को improve करने के लिए. For example, descriptions. Descriptions क्या है? इसमें आप स्टूडेंट को कहेंगे कि वो लिखे अपने होम के मुतालिक, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, जॉब और प्लेस के मुतालिक. Student should be able to write the introduction or the personal information on paper. वो बता सके और लिख भी सके. उसके बाद है शॉर्ट बायोग्राफीज ऑफ सेल्फ, फैमिली मेम्बर्स और फेमस पर्सन्स. जो भी उसका आइडियल है या फेमस पर्सन है या फैमिली मेम्बर है कोई, या इवन अपने मुतालिक भी वो लिख सकता है. उसकी हॉबीज़ क्या हैं, एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसने स्कूलिंग कहाँ से की, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़, उसको क्या पसंद है, लाइक्स, डिसलाइक्स, एट्सेट्रा. ईमेल्स टू पेन फ्रेंड. पेन फ्रेंड इस तरह का जो एक्टिविटीज़ है वो अमूमन फॉरेन में यूज़ होती है, but in this you can also write email to your best friends, जिसमें आप अपनी एक्टिविटीज़ बता सकते हैं, अपनी स्टडीज़ के मुतालिक बता सकते हैं और अपनी डेली रूटीन के मुतालिक डिस्कस कर सकते हैं किसी भी फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, एट्सेट्रा. Second level is called intermediate level. In this level, problem pages, horoscope, magazine interview, advertisement, quizzes, puzzles, films and book review. इसका थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल है. इसमें आपने क्या करना है कि डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करवा सकते हैं, उससे टास्क दे सकते हैं. हॉरोस्कोप को किस तरह से पढ़ना है, कोई इंटरव्यू अगर किसी मैगजीन में है उसको आपने किस तरह से लिखना है, एडवर्टाइजमेंट को आपने किस तरीके से राइट डाउन करना है, क्विज़ेस एंड पजल्स को आपने ऑन पेपर किस तरह से सॉल्व करना है, और कोई अगर आपने मूवी देखी है या कोई बुक रीड की है तो आपने किस तरीके से उसका रिव्यू लिखना है. So these are the different tasks and activities that a teacher can perform in the classroom for improving the skills, especially writing skill. Number 3 level is called advanced level. Advanced level में क्या है that student should be able to write a letter to the editor. He should write an essay or article arguing and defending a point of view, as well as he should able to write a research paper. इस लेवल तक स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना कि वो ऐसे लिख सकें, आर्टिकल्स लिख सकें फॉर अ न्यूज़पेपर, और वो रिसर्च पेपर भी लिख सकें. डेफिनेटली ये उसी सूरत में मुमकिन है जब उसका बिगनिंग लेवल और इंटरमीडिएट लेवल स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी ग्रामर अच्छी होगी, स्पेलिंग्स ठीक होंगे, उसकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी. जब ये सारी चीज़ें तमाम के तमाम एलिमेंट्स दैट वी हैव बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स, जब उस पर वो अबूर हासिल कर लेगा तो डेफिनेटली वो प्रॉपर तरीके से अपनी थॉट्स को कन्वे कर सकेगा. सो दिस इज़ द राइटिंग स्किल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. आई होप आप लोगों को समझ आई होगी. All the 4 skills we have been discussed in our language sessions, that were listening, reading, speaking and writing, are the integral part of English language learning. Good command over all the skills allow you to communicate your message with clarity. If you have any comment and query, you can ask in the comment section. आज का लेक्चर राइटिंग स्किल पर था जो कि कंप्लीट होता है. हम लोगों ने 4 स्किल्स को जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मेन पार्ट हैं डिस्कस कर लिया है. आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दीज स्किल्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Thanks for watching. I hope you liked the video. Do share with others. For more informative videos, keep watching my channel Candlelight. Stay happy and be blessed. Take care. Allah Hafiz.